Good morning, everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है ऋषभ and let's begin today's class for economics and finance issues and analysis. Good morning, Shreya. Good morning, Nivedita. Good morning, Isha. Class will begin बस अभी तुरंत just now. Okay, let's start. Morning, Aniket. Good morning, Monica. Let's start the class. So, news number one. इसमें बस this is a phase one kind of a news. इसमें नाम याद रखना है माइक्रॉन का. Micron is a big chip manufacturing uh, uh, factory industry company that is going to set up a chip manufacturing plant in India. ठीक है, अभी बातचीत चल रही है because there is a PLI for manufacturing and designing of chips. ठीक है, लगभग $10 billion ठीक है का PLI स्कीम है. ओके, so government said to approve Micron's $1 billion semiconductor plant. कहाँ होगा अभी ये नहीं पता. Said to approve means there is an application by Micron. Micron will be fourth company. ठीक है, चौथी कंपनी होगी and government may give a grant. ठीक है, just remember Micron the name. Okay, so the government is close to approving a proposal by Micron Technology to set up assembly, testing, marking, packaging, ATMP facility in the country with an investment of about $1 billion. $1 billion का investment करेगी Micron, which is the fifth largest semiconductor company in the world, US based company. इसके जो head and the chief is obviously Indian origin, who has studied with Pilani. Okay, so India's flagship $10 billion semiconductor scheme, वही PLI scheme for semiconductor and designing. Okay, from 2022 जो शुरू हो गई है. Semiconductor scheme offers financial incentive to set up fab plants, assembly, test. ठीक है, फिर assembly testing, marking and packaging, ATMPs, and outsourced semiconductor assembly and test units and chip design facilities. ठीक है, just remember the name, Micron. Okay, so OSAT provide packaging and testing services for multiple customers, and ATMPs are captive packaging and testing centers for a company. Just definition say not important for RBI. Can be important for if you are giving civil services. Okay. The government offers 50% fiscal support for capital expenditure to eligible companies. जैसे okay, or companies like Foxconn etc. सबको मिलेगा पैसा for having a chip manufacturing facility in India. Just remember this name, Micron fourth है ये. Now, late payment disposal of micro small enterprises disposal of cases at 5-year low. तो ये basically it is a writing or data given for or by वही MSME समाधान. ठीक है, MSME समाधान पोर्टल इज फॉर समाधान देने के लिए, टू गिव सॉल्यूशन इफ द केस क्या है, द केस इज दैट इफ द पेमेंट हैज नॉट बीन डन टू द MSEs 45 days तक, so after 45 days these micro and small enterprises can go to micro and small enterprises facilitation councils. ठीक है, in case they are not paid within 45 days of their service or goods delivery. ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ केस जो है वो 5-year लो पे है एज पर MSME समाधान पोर्टल. दैट्स ऑल. लेट्स रीड अबाउट द नंबर्स नाउ. So disposal of delayed payment cases involving MSEs hit a 5-year low in financial year 23. Only about 1,000 cases, only 1,000 cases involving 350 crore were settled in the last financial year, and it is around 74%. मान लो कि 3/4 कम है, 75% less than last year. Okay. Disposed by Micro and Small Enterprises Facilitation Council. अभी MSEFC जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है,
ठीक है, these are set up by state government. Worst performing state government is Uttar Pradesh. ठीक है, worst performing is Uttar Pradesh. For the last 2 years it is worst performing. Best performing is Tamil Nadu. एंड वो गवर्नमेंट जिसके एमएससीएफसीज में सबसे ज्यादा डी ग्रोथ हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इन 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 गिविंग अवे अवे डिलेड पेमेंट्स, दैट इज गुजरात. तो सबसे खराब है उत्तर प्रदेश, सबसे अच्छा है तमिलनाडु, और सबसे ज्यादा जहां पे लॉस हुआ है, लॉस इन द सेंस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गिविंग अमाउंट्स थ्रू एमएसएमई समाधान, एंड दैट इज गुजरात. लेट्स सी. ओके, so MSEFCs are set up by state government, settling up dispute regarding delayed payments of MSCs. Okay. Now, simple. Central government launched MSC Samadhan scheme, under which MSMEs that face more than 45-day delay in payment could approach MSCFCs, as I have told you. ठीक है, ये 2000 कब से काम कर रहा है, ये 2017 से काम कर रहा है MSME समाधान. ठीक है, अगर 45 डेज से ज्यादा डिले होता है पेमेंट, यू कैन गो टू MSCFC एंड यू कैन गेट सम सॉल्यूशंस. ठीक है, हो सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट सॉल्यूशन मिल जाए, और ऑन ऑर्डर कैन बी पास बाय MSCFC. ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन in a bid to fast track the settlement of dues. So Gujarat MSCFC witnessed the sharpest decline in disposal of cases. तो sharpest decline कहाँ का है? गुजरात का. Best performing तमिलनाडु, worst performing उत्तर प्रदेश. You can see here उत्तर प्रदेश लास्ट ईयर 69 डिस्पोज किया था, और मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में सिर्फ 21 डिस्पोज किया केसेस आउट ऑफ द टोटल केसेस जो भी होगा एमएससी को. ठीक है, दैट्स व्हाई वाज परफॉर्मिंग. ओके, नाउ सिंपल हियर, लेट्स सी डेटा. So the data on MSME Samadhan portal showed that around 1,40,000 applications regarding cumulative delayed payment were there till 2023 April 22. ठीक है, only 9.6% of cases have been mutually settled and 19% have been disposed of by the council order. Council मतलब कौन सा council? MSCFC. ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस काउंसिल जो है वो 19% केस सॉल्व किया, अराउंड 9.6 म्यूचुअली सेटल हुआ है, एंड 26% ऑफ केसेस वर रिजेक्टेड बाय द काउंसिल बिकॉज ऑफ अदर रीजंस. यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है, नाउ सिंपल. So there are disparities in performance of MSME. Tamil Nadu has an effective council, whereas Uttar Pradesh performance has been abysmally low. Okay. Now simple news. इसमें नंबर याद मत करना. Trust me, don't remember the number. Just remember Bank of Maharashtra net profit up by 136%. We have seen it multiple times. इतने महीने से पढ़ रहे हैं, तो यही समझ में आ रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फास्टर देन एनी अदर बैंक. ठीक है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है इज हाईएस्ट इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र. तो वो वही न्यूज यही है. पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पोस्टेड 136% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. ठीक है, नेट प्रॉफिट इन मार्च क्वार्टर 840 करोड़. ठीक है ना, बस जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ सिंस दे आर डूइंग बेटर बिजनेस, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, so they want to raise money. कितना money? Around 7,500 crore. Bank of Maharashtra is looking to raise. How they will raise it? They will raise it by follow on public issues. ठीक है, ये publicly listed company है, तो follow on public issues आ सकता है. There can be rights issues and there can be qualified institutional placement. अभी qualified institutional placement में क्या होता है? Institutional investors can invest here, retail के लिए नहीं है. And also raise capital through बेसल 3 बॉन्ड. बेसल 3 कौन से बॉन्ड है? 81 और टीयर 2 बॉन्ड्स. तो किसी भी तरह से 7,500 करोड़ रेज करना चाहता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बिकॉज दे आर डूइंग बेटर बिजनेस. अब कोई भी कंपनी 100% से ज्यादा अगर ग्रो कर रही है, 130% ज्यादा इन दिस केस, देन दे वांट मोर मनी सो दैट दे कैन गिव मोर क्रेडिट, क्योंकि डिपॉजिट तो हमारा कम है, क्रेडिट डिपॉजिट के बीच में अच्छा खासा गैप है. वी हैव सीन इट. ठीक है, दैट्स व्हाई जस्ट रिमेंबर कि इन तरीकों से Bank of Maharashtra is going to raise 7,500 crore. कौन से? Follow on public offer, rights issue, qualified institution placement, and 81 and tier 2 bonds.
नाउ दिस डेटा कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनकम टैक्स के ऊपर, क्योंकि पूरी रिपोर्ट आई हुई है, वो धीरे धीरे न्यूज में आती है, तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे. So IT collection means income tax collection cost falls to a 20-year low. अभी cost of collection क्या है? Basically administrative cost, salary cost, ठीक है, transportation cost, मतलब टैक्स उगाही के लिए टू रेज टैक्स है, ठीक है, compliance बढ़ाने के लिए whatever cost is borne by the income tax department is cost of collection. वो फॉल किया है कितना? अराउंड 0.5%, 0.53% टू बी precise, 0.53% to be precise. ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. ठीक है, लेट्स सी. सो इन नंबर ये याद रखना है, 0.53%. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन हैज ड्रॉप फ्रॉम अराउंड 0. to around 0.5%, लोएस्ट इन 20 years. ठीक है, वाई? ड्यू टू टेक इनेबल्ड ओवरसाइट इकोनॉमिक एक्टिविटी. वाई? अब ये क्या है? तो अगर याद हो तो बार बार बजट में ये बात आती है कि देयर विल बी फेसलेस, ठीक है, देयर विल बी फेसलेस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिगार्डिंग इनकम टैक्स. अब फेसलेस हो गया है एंड टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, तो मैन पावर के ऊपर जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, खुद पे किसी के यहाँ जाएगा, बैठेगा, बात करेगा, 10 दिन में जो काम होगा वो जल्दी हो जा रहा है विथ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, नो वन हैज टू मूव एनी प्लेस. आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए and your any dispute will be resolved, faceless dispute resolution. Also widening of net tax deduct at source. अब ये TDS कितना बढ़ गया है? There are now 65 sources, 65 sources from which TDS can be deducted. So already tax लेने का, whatever tax is being collected by the government, there are multiple sources through which the government is टेकिंग कलेक्टिंग टैक्सेस. ठीक है, तो इसकी वजह से भी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 22. ये जो रिपोर्ट आई है 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए है. ठीक है, सो डेटा विद द आईटी डिपार्टमेंट शोड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हैज ड्रॉप टू 0.53% ऑफ द टोटल डायरेक्ट रिसीट्स ऑफ 14.12 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022. कितने से कम हुआ है? फ्रॉम 2000, 1.36%. आगे जाके इसमें एक और डेटा आएगा कि टोटल टैक्स कलेक्टेड हैज डबल्ड, टोटल टैक्स कलेक्टेड हैज डबल्ड, बट स्टिल कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हैज फॉलन डाउन. ठीक है, मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स इट हैज फॉलन डाउन, दो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हैज रिजन अप फ्रॉम 2000 एंड 2001, बट वो जो राइज है वो बहुत ही सिक्वेंशियल है, सिंपल छोटा राइज, स्लांटिंग स्लोप. ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मीन्स सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, IT expenses, capital spending means any spending that is done by the income tax department to raise certain taxes or collect taxes is called cost of collection. Oh, now while direct tax receipts have nearly doubled from 7.4 trillion to 14.2 trillion, cost of collection has seen a more graded increase from 4500 crore, around 4500 crore to 7500 crore. ठीक है, means as a percentage of total tax collected it is far less. गुड मॉर्निंग सुवर्णा. ठीक है, ये याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कितना हुआ है और उसके परसेंटेज पे कितना कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है. तो 0.53 इट इज 7479, अराउंड 7500 करोड़. यू कैन रीड इट लाइक दैट. ठीक है, वीट प्रोक्योरमेंट्स बाय गवर्नमेंट जंप्स बाय 12%. वीट प्रोक्योरमेंट जंप्स बाय 12%. बस यही है इसकी सबसे बड़ी न्यूज. एंड दिस नंबर 11.1 मिलियन टन्स. मार्केटिंग ईयर क्या होता है? मार्केटिंग ईयर इज सेम एज फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल वाला, अप्रैल टू मार्च. ठीक है, 11.1 मिलियन टन्स. और ये कितना ग्रोथ कितनी है? 12%. 12% की ग्रोथ है, मतलब लास्ट टाइम कितना था? अराउंड 10 मिलियन टन. ठीक है, 12% की ग्रोथ है. जस्ट रिमेंबर दिस. हाउ मच MSP आउटफ्लो फॉर कलेक्शन फॉर वीट? 22,663 करोड़. अगेन इंपॉर्टेंट डेटा. नाबार्ड आ रहा है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर RBI.
ओके, अबाउट 1200, डोंट रिमेम्बर ऑल दिस नंबर। ठीक है, एमएसपी आउटफ्लो ऑफ अराउंड 23,663 करोड़। ऑल्सो रिलैक्स नॉर्म्स फॉर दीज 5 स्टेट्स, मतलब क्वालिटी ऑफ व्हीट का जो नॉर्म्स है वो रिलैक्स किया गया फॉर एमपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। यही बेल्ट है, मीन्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो पता ही होगा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, दिस इज द व्हीट बेल्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। and which is the nodal authority for MSP and procurement by the government, that is FCI, ये याद रखना है। Remember this, FCI is the national nodal agency that undertakes procurement of wheat at MSP। ठीक है, remember this। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है, बट if you will remember it will be better। Not very important news, e-com पोर्टल ओपन फॉर हैंडलूम। ठीक है, और इसको, अब पोर्टल है सो है, इफ यू रिमेम्बर ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, इसके साथ भी इसको लिंक किया गया, इट इज बीन लिंक टू दिस। ठीक है, ई कॉम पोर्टल हैज बीन लिंक टू ओएनडीसी ऑल्सो। ठीक है, सो यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ई कॉमर्स पोर्टल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर। एंड ऑब्वियसली अगर कोई टेक्नोलॉजी का पोर्टल यूज करते हैं तो इट एलिमिनेट्स द मिडिल मैन। कोई भी पोर्टल होगा कहीं भी, अगर फेसलेस आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए हम काम कर रहे हैं तो वहां मिडिल मैन खत्म हो रहे हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स फ्रॉम 3,50,000 हैंडलूम वीवर्स एंड 2,70,000 हैंडीक्राफ्ट आर्टिसान डायरेक्टली टू कस्टमर। ठीक है, सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक इनिशिएटिव टू सेट launch a task force to address environmental concerns in the textile sector also। ठीक है, now this is the portal name, indiahandmade.com। ठीक है, now Goel, means Piyush Goel has stated that an e-commerce portal on handloom and handicraft products has been launched, which would be integrated with open network for digital commerce। ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, किसको, indiahandmade.com। ठीक है, अब ओएनडीसी क्या है, इट्स अ सरकारी अमेजोन काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, अभी पायलट चल रहा है बैंगलोर, दिल्ली, बड़े बड़े शहर में, हैदराबाद, लाइक दैट। ओके, अब ये कहानी है पूरी। ठीक है, देर इज अ मंथली इकोनॉमिक रिव्यू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कहानी अभी बता दे रहे हैं, फिर पढ़ लिया जाएगा इसको। सो ओवरऑल, Finance Ministry in its latest monthly economic review has said that downside risks overweight on the अपसाइड रिस्क ऑफ द इकोनॉमी। और डाउन साइड रिस्क मतलब वो चीजें जो इकोनॉमी को नीचे खींचेंगी, डाउन साइड। ठीक है, सो डाउन साइड रिस्क वे ऑन ग्रोथ फोरकास्ट एज स्टेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब generally we have seen that the government is always very happy and positive that we will grow, no matter what we will grow। Okay, but since OPEC Plus has also reduced the supply of oil in the in the world। ठीक है, तो हम जो बेस लाइन जीडीपी के लिए $85 लेके चल रहे हैं क्रूड का प्राइस, वो तो वैसे भी वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस। तो दैट्स व्हाई तीन प्रॉब्लम है, द थ्री डाउन साइड रिस्क दैट हैज बीन सेट सेट बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री दैट कैन इफेक्ट आवर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24। और वो क्या है, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस सबसे ऊपर, क्योंकि 80 वी इंपोर्ट 80% ऑफ आवर ऑयल। सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट थोड़ा भी बढ़ेगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन विल कम टू इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, फूड कॉस्ट बढ़ेगी, इंपोर्टेड ऑयल कॉस्ट तो बढ़ेगी। प्लस वी विल बी गिविंग अवे मोर डॉलर्स, डॉलर ज्यादा दे रहे होंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिर रहा होगा। इफ वी विल बी गिविंग मोर डॉलर्स, द डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज। ठीक है, देन अब उससे क्या होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो द कॉस्ट ऑफ डॉलर विल अप्रिशिएट अगेन अगेंस्ट रुपी, मीन्स रुपी विल अगेन स्टार्ट टू डिप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर। अभी भी 82 83 के आसपास चल रहा है, वो और गिरने लगेगा। तो मल्टीपल ये होता है ना विशियस साइकिल, दिस विल क्रिएट अ विशियस साइकिल। नंबर वन तो है क्रूड ऑयल, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है, डाउन साइड रिस्क। नंबर टू, एडवर्स वेदर कंडीशन। अभी एडवर्स वेदर कंडीशन क्या है, एडवर्स वेदर कंडीशन इज बीन रेफर्ड
तो ये है एल नीनो. आई हैव टॉक्ड अबाउट एल नीनो. लेट्स मेक इट सिंपल. Let's make it simple. I think some of the videos will be uploaded. ठीक है. By I think by 30th of April every video will be recorded and uploaded. ठीक है. तो जितना है उतना पढ़ लो. Plus PDFs are already uploaded, so you can read from PDF as well. और जैसे जैसे वीडियो आएगा you can obviously revise it from the video. Okay. For IFSC. Okay. And if you want more details, please ask the question in the group. If Ashok sir will be free, he will obviously answer you. ठीक है. एवरीवन इज वर्किंग. ठीक है. जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स रहिए. आपको आपका पूरा वीडियो मिलेगा. पीडीएफ है, पढ़ लोगे तो भी आई थिंक 50 क्वेश्चंस ही आने हैं फेज 2 में. देयर इज एन ओपन ग्रुप. इफ यू आर अ कोर्स सब्सक्राइबर, देयर इज एन ओपन ग्रुप. If anyone can give the link here of the group. Okay. Now, India's economy continues to be robust, but downside risks such as rising oil prices, adverse weather condition. क्यों? El Nino causes what? Drought-like conditions in India. 50-50 है, but है. ठीक है. And the global banking crisis, financial crisis जो चल रही है. Continuous failure of Western banks. Okay. Oh. So upside potential in gross domestic product growth in current financial year. तो ये तीन reasons हैं. Simple reason है: rising oil prices, adverse weather condition, and global banking crisis. Okay. So downside risk to official forecast of 6.5% on baseline dominate the upside risk. ये पहली बार गवर्नमेंट ने ऐसी बात कही कि downside risk जो है, और ये ऐसे risk है that is not in the control of the country and the government of the country. ठीक है. It dominates the upside risk. Why OPEC surprise production cut has seen oil prices to rise in April. ठीक है. Of their lows of $70 per barrel. इसको $100 के ऊपर ले जाना चाहती है. एटलीस्ट $100, 90 से $100 के बीच में रखना चाहती है ओपेक. ओके. Okay. Now, further trouble in the financial sector in advanced nation can increase risk aversion in financial market and impede capital flows. अब इसका क्या मतलब है? Since banks are falling, since banks, ठीक है, financial institution like banks are under severe stress in Western countries, that proves what? Less free money. क्यों लेस फ्री मनी? क्योंकि जब बैंक्स और इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, हाउ कैन दे गिव अवे मोर लोन्स और क्रेडिट्स? ठीक है. सो दैट्स व्हाई देयर इज एन इंक्रीज रिस्क अवर्जन. रिस्क अवर्जन मतलब रिस्क कम करने के लिए जो भी मेजर्स ले सकती है बैंक, वो बढ़ा है. दैट्स what will it cause? It will cause reduced capital flows to markets like India. ठीक है. Point number 3 was always forecast of El Nino. ठीक है. At the margin have elevated the risk of reduced Indian monsoon rains. ठीक है. ठीक है. हमारा इकोनॉमिक सर्वे 6.5 कहता है, एडीबी 6.4 कहता है, वर्ल्ड बैंक 6.3 कहता है, ओईसीडी 5.9 कहता है, और आईएमएफ तो घटा के फिर 5.9 कर ही दिया इंडिया का. सो वी विल सी हम लोग 5.9 और 6.5 के बीच में कहीं खेल रहे होंगे इन फाइनेंशियल ईयर 24. एंड वॉट एवर विल बी द ट्रू सिनेरियो, कम से कम 2 क्वार्टर के बाद समझ में आएगा. 2 क्वार्टर मीन्स 2 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर. वी विल द पिक्चर विल बी क्लियरर. ओके. 2 quarters of financial year. Okay. Now the report has also said that domestic fiscal parameters for center and state has been robust. Means we are on a good path. Ratio of revenue expenditure to capital expenditure is lower than the same period last year. Obviously revenue expenditure कम हुआ है गवर्नमेंट का. That's why revenue deficit को भी हमें कम करना है, 0 तक लाना है. By financial year 26 हमें अपना 4.5% करना है क्या? फिजिकल डेफिसिट. तो डेफिसिट कम करने के ऊपर काम कर रही है गवर्नमेंट.
For financial year 24, Central announced capex of $10 trillion बार बार ही आता है. Remember this 1.3 trillion for states. ठीक है, 50-year interest free loans. Okay, the review warned that global economic prospects continue to be uncertain and the latest to have hit the banks, especially in advanced economy. I told you. ठीक है, बैंक्स हिट होंगे तो जो बाकी बैंक्स होंगे वो ज्यादा रिस्क एवर्स रहेंगे कि आई विल नॉट गिव क्रेडिट, so that will cause reduced capital outflows to developing economies. Okay, now also World Economic Outlook report by IMF has said that global growth will be 2.8% in 2023 calendar year. ठीक है, reduced from 3.4% in 2022. ठीक है, तो globally जब low हो रही है growth, so obviously Indian government is saying that maybe the after effects, the spillover effects will be on India as well. Also about the banking sector, this report has said that India's banking system is less prone to the kind of failures that we have seen in Silicon Valley Bank, Signature Bank or Credit Suisse, because Indian banking system is more robust. We have more money, ठीक है, more backup money than even the Basel norms that are suggested by Basel norms. ठीक है, that's why we have a robust banking system, highly supervised by RBI. ठीक है, so it said that banking supervision was robust with RBI's overarching coverage of institution regardless of asset size. ठीक है, नाउ CSR के ऊपर आई थिंक एक बार क्वेश्चन आया है कभी RBI में, तो पहले ये समझ लेते CSR क्या है. सिंपल 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, 2% of net profit in last 3 years. So corporates have to contribute. सारे corporates को नहीं करना है, but those corporates that have let's say $5 billion का उनका net worth है और $10 billion का turnover है, तो these kind of corporates, ठीक है, और या $50 million का वो है net profit, so these kind of corporates have to have 2% of net profit CSR spending for the last 3 year profit. 3 साल का जितना प्रॉफिट है उसका 2%. तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट में स्पेंडिंग कम हुई है, नॉर्थ ईस्ट में CSR स्पेंडिंग कम हुई है. मोस्ट ऑफ द CSR स्पेंडिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड बिगर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, ठीक है, दैट आर हाईली इंडस्ट्रियल स्टेट्स. दिल्ली NCR एक इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पे टैक्स ज्यादा आता है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रन फ्रॉम महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटका रीजन और गुजरात रीजन. दैट्स व्हाई दीज स्टेट्स हैव मोर CSR स्पेंडिंग रादर देन द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा स्पेंडिंग CSR की कहाँ हुई है? असम में हुई है. रिमेंबर दिस. ठीक है, तो टोटल स्पेंडिंग इन ऑफ मतलब अगर 100 रुपीज CSR में आ रहा है तो 7.7% इज गोइंग टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन. ठीक है, 7.7%, यही डेटा है जो याद रखना है. So companies spent a smaller share of their mandatory charitable spending in Northeast. That is 7.7% of the total CSR spending in financial year 22 was done in Northeast. Okay. CSR I have told you 2% of their profits for last 3 years. For not for all companies, $5 billion net worth हो या or not and or $10 billion turnover or $50 million million not billion $1 million profit, net profit, then they are eligible for CSR 2%. अब इंडिया इज द ओनली कंट्री, जब ये क्वेश्चन आया था, when India was the only country जहाँ पे कंपल्सरी CSR है. बाकी जगह भी CSR है बट कंपल्सरी CSR इज इन इंडिया. Okay, the share of Northeast, let's see, is 7.7%, and top 5 states, 35% share of CSR is in top 5 states. Now Assam was the biggest recipient of CSR. So Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Karnataka, so these are the big states, has gotten more than 35% of the overall CSR spending. ठीक है, some of this allocation is due to the fact that most companies are located in a few commercial belts of India, mostly in metros, like not in metros, around the metros,
ऑफ मुंबई, जैसे दिल्ली का दिल्ली एनसीआर है, एनसीआर मीन्स मुरादाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ऑल दिस कम, साहिबाबाद, मोदी नगर, एवरीथिंग कम्स अंडर यूपी मेरठ। ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश में आता है, बट द इट इज लाइक सैटेलाइट टाउन्स टू दिल्ली इटसेल्फ। दैट्स व्हाई यहाँ पे स्क्यूड है कलेक्शन एंड द स्पेंडिंग इन सीएसआर। ओके, तो टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटक। ठीक है, 35% यहाँ पे सीएसआर स्पेंडिंग होती है। 35% मीन्स अराउंड 14,500 करोड़। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और टोटल स्पेंडिंग इन नॉर्थ ईस्ट कितना है? 7.7% रिजल्ट टू 7,918 करोड़। ठीक है, 7.7%। नाउ अ नेम, अब ये फेज 1 के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज नेस्कॉम इज अ बिग आईटी एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन फॉर आईटी एंड सर्विसेज। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज chairperson? Anant Maheshwari, chairperson of NASCOM, replaced whom? Krishnan Ramanujam। ठीक है, सेकंड पॉइंट, वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन, हु इज वाइस चेयरपर्सन? सो राजेश नाम्बियार इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ NASCOM। तो चेयरपर्सन आनंद माहेश्वरी, वाइस चेयरपर्सन राजेश नाम्बियार। रिमेंबर द नेम, पर फेज 1 फेज 2 में ये सब नहीं आता है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द नेम। Now again from that report of income tax. So personal income tax to GDP ratio rises to 2.94%. Means टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात जो करते हैं, तो ये पर्सनल इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो हैज रिजन टू अराउंड 3% इन फाइनेंशियल ईयर 22.94। नहीं भी याद हो रहा, 3% तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो 2014-15 से कंपेयर करें तो 2.1% था, बढ़ के अराउंड 2.94, अराउंड 3% हो गया पर्सनल इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो। हायर टैक्स बेस इसकी सबसे बड़ी वजह है। क्या? हायर टैक्स बेस मीन मोर पीपल आर गिविंग टैक्सेस, प्लस more tax deducted at source is there, plus due to GST and network and more technology involved, the government now has more available data so that the government can have more tax collected। ठीक है, अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है, म्यूचुअल फंड है, डिविडेंड्स है, एवरीथिंग इज डीमटेरियलाइज्ड। ठीक है, इन डिजिटल फॉर्म। सो गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग अबाउट यू थ्रू अ सिंपल पैन कार्ड। दैट्स वाई कोई भाग नहीं सकता। ठीक है, टैक्स का बेस बढ़ा है, टैक्स पेयर बेस बढ़ा है और टैक्स वायंसी बढ़ी है। दैट्स वाई टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ा है एट 3%, अराउंड 3%। So now what does it indicate? So it indicates that taxpayer base is widening as a result step taken by the present government। ठीक है, और बढ़ के कितना हुआ? 2.94%। 2.94, अब ये नंबर भी इंपॉर्टेंट, 2.94%, 2.94%, अराउंड 3%, वॉट एवर सूट्स यू। ठीक है, अगर लिख रहे होगे तो अराउंड 3% लिख सकते हो, अगर आंसर लिखने को आया तो। इफ नॉट, इफ इट इज आस्क्ड इन अ मल्टीपल चॉइस, तो 0.94। Okay, the personal income tax collection, including securities transaction tax, increased to around 7 trillion rupees in 2000 financial year 22। Okay, introduction of new data sources like statement of financial transaction like dividend, interest, securities, mutual fund, information from GSTN, okay, has led to more than 1000% increase in reported information, means more data with the government, more data, better data, clean data। So government has more data, अगर अच्छा data होगा तो the government will obviously have better collection। ठीक है, also introduction of new tax deducted at source which have almost doubled from 36 to 65 in last 8 years। ठीक है, many things have TDS now। ठीक है, बहुत जगह TDS रखता है, even for if you are doing higher check transaction, higher cash transaction, उस पर भी TDS हो गया है। So that's why government is already earning more through TDS also। कितना अर्न किया है?
YTDS 144 करोड़, 144 करोड़ इन जस्ट डबल हो गया है। 70 करोड़ पहले करते थे 2015-16 में, वो बढ़ के हो गया है 144 करोड़। रिमेंबर दिस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 144 करोड़ for financial year 22। ठीक है, the also doubling the number of unique deductees from 4.8 crore to 9.2 crore। नंबर्स है, दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। दैट्स ऑल आई कैन से। सिंपल सी बात यह है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज मोर डेटा अबाउट यू, गवर्नमेंट नोज मच मोर देन बिफोर। Now this is a good news that out of pocket health spend share falls as reported by National Health Authority। ठीक है, तो कितना कम हुआ है तो 2019-20 में। अब ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज गॉन डाउन बिलो 50%। ठीक है, बिलो 50% फ्रॉम 62.6%। आउट ऑफ पॉकेट मीन्स अपना पैसा खुद, लोगों के पास इंश्योरेंस है नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग। द गवर्नमेंट शेयर ऑफ हेल्थ शेयर इन द गवर्नमेंट जीडीपी इज अराउंड 1.3%। इसीलिए आज भी लोग 50% से कम है। 47% भी बहुत अच्छा नंबर नहीं है, बट 62.6% से हम कम होकर 47% आए, इट्स अ वेरी गुड नंबर, थैंक्स टू आयुष्मान भारत ऑल्सो एंड थैंक्स टू इंक्रीज स्पेंडिंग by the government in public health sector। Also health is also a part of state governments list, स्टेट लिस्ट का भी पार्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी धीरे धीरे पैसा बढ़ाना होगा, जो सेंटर के काम करने से होने वाला है नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई याद रखना है कौन सा नंबर, ये वाला। फ्रॉम 62.6% इट हैज फॉलन टू 47% इन 2019-20। ठीक है, ऑल्सो इट हैज शोन अ जंप बिकॉज द गवर्नमेंट शेयर, ठीक है, द गवर्नमेंट शेयर jump is 29% to 41%। ठीक है, the government share jump to 41% thanks to आयुष्मान भारत and some better facilities provided by the government hospital। ठीक है, कोविड के आसपास तो ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने अच्छा ही का ठीक ठाक काम किया है। Okay, now as a percentage of GDP, government health expenditure rose marginally from 1.13% to 1.35% in 2019-20। Remember this, 1.35% in 2019-20 गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, एनएचए डेटा। ऑल्सो द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर रिटर्न टू 2017-18 level after registering a dip in 2018-19 to 1.28%। ठीक है, 1.35%। ठीक है, हेल्दी ट्रेंड। हेल्दी ट्रेंड क्या है, देखो, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर राइजिंग, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्लाइनिंग। वेरी गुड कि गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है सही जगह फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, also government expenditure as a part of GDP rising, social security expenditure on health rising। social security health कौन सा है, वही आयुष्मान भारत। also very important, private health insurance is also rising। जिनके पास पैसा है वो हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा ले रहे हैं। इन ड्यू टू कोविड ऑल्सो पीपल आर टेकिंग मोर हेल्थ इंश्योरेंस नाउ। ठीक है, तो ये यहाँ पे है भी, कवरेज ऑफ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस also showed an upward trend, rising from 3.7% to 7% in 2019-20। Also contributed to decline in out-of-pocket expenditure to 47%। याद रखना है ये नंबर। Okay. Also target, the government has set a target by raising health expenditure to 2.5% of GDP by 2025। अभी कितना है, 1.35, 1.35%। ये बढ़ा के करना कितना है, 2.5%। ठीक है, पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज आल्सो डबल्ड फ्रॉम 1100 रुपीज टू 2000 रुपीज। ठीक, नाउ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, इंडिया इज 38, नॉट द बेस्ट रैंक ऑफ इंडिया, बेस्ट 35 था, बट स्टिल 38 पे। स्कोर याद रखना, स्कोर इज इंपॉर्टेंट, 3.4 आउट ऑफ 5। हाइएस्ट इज सिंगापुर, टॉप रैंकर इज सिंगापुर, नंबर 1। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में।
Okay. So India's rank is 38th among 139 nations with a score of 3.4 out of 5 in the latest logistic performance index. Okay, अब ये बाई वर्ल्ड बैंक है, ये भी याद रखना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाई वर्ल्ड बैंक. रिमेंबर दिस ऑल्सो. इंडिया की रैंक, इंडिया का नंबर एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाई वर्ल्ड बैंक. सिंगापुर इज नंबर 1. ठीक है, अब ये देख ही लेते हैं कल इसको, इस चार्ट. इंडिया 3.4 आउट ऑफ 5, चाइना 3.7, सिमिलर एज यूके, यूएस 3.8, कनाडा 4, ऑस्ट्रेलिया 3.7, ब्राजील 3.2. ठीक है, तो हमने रैंक अपनी इंप्रूव की है फ्रॉम 2018. ठीक है, 6 वी हैव रिजन 6 स्पॉट्स. जस्ट रिमेंबर द नंबर. वी आर 38th रैंक. जो भी हमारा नंबर है 3.4 आउट ऑफ 5, दैट्स इट. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक. ठीक है, एंड द पैरामीटर्स ये याद रखना है. द 6 कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स: कस्टम्स, इंफ्रा, शिपमेंट, competence and quality, timeliness and tracking and tracing. So these 6 are the components on the basis of which the marks are given. सिर्फ एक जगह है जहाँ इंडिया पुअरली परफॉर्म किया है. ठीक है, दैट इज इन कस्टम्स. आउट ऑफ द 6, इंडिया has performed very poor in customs. Okay. ओके, अब ये फेज 1 वाली न्यूज है. आई रीड अ पोस्ट, ऑल टाइम नेट हाई प्रॉफिट ऑफ हाउ मच दिस. ठीक है, अराउंड 1200 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23. ग्रोथ ऑफ 37%. सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स नेट प्रॉफिट. वो कितना है? 865. एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी इज 1100 करोड़. ठीक है, आफ्टर टैक्स तो कम ही हो जाएगा ना प्रॉफिट टैक्स देने के बाद. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 865 करोड़ या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 865 करोड़. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 865 करोड़. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अराउंड 1200 करोड़ और 1100 करोड़. मोर नियर टू 1100 करोड़ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. 865 करोड़ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर आईरीडा. ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. तीसरी न्यूज है ये, 3 बार न्यूज में आ चुका है IRD. जस्ट थोड़ा बहुत देख लेना इसके बारे में. देख क्या लेना, सिंपल है. तो फाइनेंशियल कंपनी बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गया. ये दूसरी चीज, IPO आने वाला है IRD का. नाउ इट्स अ थ्योरेटिकल न्यूज, बट पढ़ लेते हैं. इंडिया चाइना बिकमिंग हाई इनकम नेशंस विद डिसरप्शन which will disrupt global economy. It is said by World Bank chief economist. ये नाम याद रखना है, इंदरमीत गिल. इंदरमीत गिल, World Bank chief economist. इंदरमीत गिल. So he has said that if large economies like India and China were to become high income countries, it will bring a huge disruption in the world. और इसका रीजन दिया गया है कि this is because US and other Western nations, generally European nations are small nations. ठीक है, so US and other Western nations that have a certain stage of development and share in the world economy. ठीक है, the world is not used to such transition and there are 30 countries which have reached high income since 1950. Mostly they are small economies. ठीक है, तो इसका रीजन ये दिया है कि यूएस एंड वेस्टर्न नेशंस जो हैं, ठीक है, दैट हैव सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट. पर कैपिटा इनकम इज देयर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर. ठीक है, तो जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है, बिकॉज एवरी अदर कंट्री ऑफ वेस्ट की जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आर डेवलप्ड कंट्रीज विद हायर इनकम एंड ऑल्सो डेवलप, दे आर इन अ डेवलप्ड स्टेज. वहां के पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में है. ठीक है, बेटर इंडिसेस है, हैप्पीनेस इंडेक्स हो या फिर पॉवर्टी इंडेक्स हो, वो सब दे आर परफॉर्मिंग वे बेटर. तो दे हैव अ बेटर डेवलपमेंट मेजर, सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि इंडिया चाइना का नहीं है. दो इफ वी इंक्रीज आवर बिकम हाई इनकम कंट्री, वी विल नॉट हैव अचीव्ड दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो यूएस या वेस्टर्न यूरोप में है. That is a cause of concern. Also, income distribution is very poor. At least in India, it is very poor. ठीक है, that is a cause of concern. तो ये कहाँ बात हो रही थी? इकोनॉमिक ग्रोथ इन मिडिल इनकम कंट्रीज.
कि इंडिया तो अभी लो मिडिल इनकम है, चाइना इज मिडिल इनकम, इंडिया इज लो मिडिल इनकम, बट ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज बाय 2050, हम भी हो सकता है कि डेवलप इकोनॉमी हो जाए, ठीक है। So he also highlighted the problem behind countries getting trapped, such as rising wages in middle income countries, result in loss of labor intensive sector. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, in the recent past, why China grew? Because there was high labor wage demand in US and Western country. तो उन्होंने क्या किया, आउटसोर्स करना शुरू किया इंडिया और चाइना को, इंडिया को सर्विसेज एंड चाइना को मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट दे कैन गेट चीपर आउटपुट। वाई? बिकॉज इंडिया चाइना लेबर इंटेंसिव कंट्री, बहुत लोग है, जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, पॉपुलेशन है, भरी भरे पर हैं लोग। So if these countries like India and China become middle income to higher income countries, means again वही प्रॉब्लम हो जाएगी, cost of labor will go high. If cost of labor will go high, if cost of labor will go high, there will be a resultant drop of employment in labor intensive sector. Why? Because industries as always wants profit maximization. तो वो ये सोचेंगे कि जितने में हम लेबर एक्स्ट्रा लाएंगे, जितना पैसा देके, इट्स बेटर दैट वी मैकेनाइज आवर इंडस्ट्रीज लाइक लेदर, टेक्सटाइल एटसेट्रा, ठीक है। दैट विल लीड टू लॉस इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जहां पे अच्छा खेल सकती है इंडिया चाइना जैसी कंट्री दैट है हायर डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास लेबर, वी आर लेबर इंटेंसिव कंट्री, वी आर नॉट कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। सो इफ वी आर गोइंग टू बिकम हायर इनकम कंट्रीज, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लेबर विल बी हायर इन इंडिया, lesser employment will be given and more automation will be done. That will result in loss of labor intensive sectors and loss of further employment. Okay. So these nations have trouble getting into more capital intensive or more innovative sector because we are कैपिटल थोड़ा कम तो है, चाइना से तो काफी कम है। ओके, सो इशू क्या है? सिंस we do not have, we means India China do not have that level of development income distribution as the West have. That's why it can cause disruptions, and also disruption due to high income countries. If they will become high income, क्या हो जाएगा उससे? Cost of labor will be high, then the production and manufacturing can be affected for labor intensive sector. ठीक है, ये दो issue है। Okay, now important one, regulatory body in news, RBI UCB से related एक न्यूज है। यूसीबी को क्या बोलते हैं? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो दो, ठीक है, अब सिंपल सा याद कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में यूसीबी, सिंपल सी बात है। टीयर 4 टीयर स्ट्रक्चर किया गया, टीयर 1 2 3 4, ठीक है। टीयर 1 को सिंगल डिस्ट्रिक्ट वाले को 2 करोड़ पे रहना है, नेट 1.5 करोड़ फॉर टीयर 2 टू टीयर 4, 50% बाय 2026, 100% बाय फाइनेंशियल ईयर 2028, ये अचीव करने के लिए 5 करोड़, ठीक है। ये तो एक हो गया। पॉइंट नंबर 2 इज 100 करोड़ फॉर टीयर 1, उसके बाद एक एक जीरो बढ़ाते जाओ टीयर 4 तक, मीन्स 100 से 1000 करोड़ टीयर 2, 1000 से 10,000 करोड़ टीयर 3, एंड 1000 प्लस 10,000 प्लस करोड़ डिपॉजिट अगर है तो टीयर 4 यूसीबी, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया था, है ना, ठीक है ना। डेट याद रख लेना 26-28 वाली, ठीक है। नाउ तो अब क्या चेंज है? दिस सर्कुलर्स डील विद, लेट्स रीड इट यहाँ से। So the Reserve Bank of India has harmonized the provisioning norm for standard asset to all categories of UCB. Standard asset के ऊपर भी provisioning, I have told you, set aside certain fund, ठीक है, so that the asset, or the asset means यहाँ loan होता है, loans can be covered in case there is a default, it can be covered. तो जो स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, जो एनपीए नहीं होते हैं, 90 दिन वाला उस पर नहीं लगता है, 90 डेज से ज्यादा होता है तो एनपीए हो जाता है, स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर भी प्रोविजनिंग की जाती है, कम की जाती है बट की जाती है। वो कितनी की जाती है, इसमें क्या चेंज हुआ है वही पढ़ना है, ठीक है। तो करंट स्टैंडर्ड इज दिस, डायरेक्ट एडवांसेस, एग्रीकल्चर, रियल स्टेट, हाउसिंग सेक्टर एंड अदर एडवांसेस एंड लोन्स, ठीक है। तो चेंज सिर्फ ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, टीयर 1, क्योंकि ऊपर देखे होगा लिखा है हार्मोनाइज्ड, ठीक है, हार्मोनाइज्ड प्रोविजनिंग सिस्टम मींस if you are tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, any UCB you will have a similar rate of provisioning, similar rate of provisioning। तो टॉप 3 जो है
means agriculture, real estate and housing sector. Top 3 ABC have rate of provisioning similar. Tier 1 हो या Tier 2 हो, देख रहे हो 0.25% for agriculture provisioning, 1% for commercial real estate provisioning and 0.75% for housing real estate provisioning. तो इसमें Tier 1 और Tier 2 सेम है provisioning rate. Only this provisioning rate of other advances is different. तो इसको सेम करना है 0.4%. बस यही चेंज हुआ है, ऊपर कुछ चेंज नहीं है, वो तो याद करोगे ही. एग्रीकल्चर 0.25% स्टैंडर्ड एसेट फॉर स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग, 0.25% एग्रीकल्चर, 1% कमर्शियल रियल एस्टेट एंड 0.75% फॉर हाउसिंग सेक्टर. और ऑल अदर लोन्स बाय यूसीबी उसको करना है 0.4% का प्रोविजनिंग. For tier 1 also you will have to do 0.4% provisioning in case of other loans. यही चेंज है. और ऐसा नहीं है कि आज करना है, इट हैज टू बी डन बाय फाइनेंशियल ईयर 25. ठीक है, डन बाय फाइनेंशियल ईयर 25. ठीक है, क्योंकि अभी तो 0.25 है ना, 0.25 से 0.4 जाने के लिए आपको 2 साल का समय मिलेगा, 2 ईयर, क्योंकि अभी शुरू हुआ अप्रैल, इट विल एंड इन मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक आपको 0.4% प्रोविजनिंग रेट पे पहुंच जाना है टीयर 1 को. टीयर 1 कौन वाली है? 100 करोड़ डिपॉजिट, 2 करोड़ नेट ओन फंड एंड सिंगल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये है टीयर 1 सबसे छोटी वाली यूसीबी. ओके, तो यही लिखा है आपको. नाउ लेट्स सी द ये डिटेल. Okay, so from 0.25% for tier 1 UCB, all other advances and loans, you will have to reach 0.4% by March 31, 2025. यही है न्यूज, यही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है. बाकी तो जो पहले हुआ था वो तो है ही. ठीक है, so 0.3% from 2.5 by March 31, 2024 means end of financial year 24. ठीक है, हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में यू रीच टू 0.35 and to 0.4 by end of financial year 25. Just remember this. 2 साल का समय है, from 0.25 to reach 0.4%, 0.5% करके बढ़ाना है. ठीक है, सॉरी 0.05%. ठीक है ना, सिंपल, रिमेंबर दिस. बस यही चेंज हुआ है. प्रोविजनिंग नॉर्म फॉर स्टैंडर्ड एसेट फॉर टीयर 1 यूसीबी increase it to 0.4% from 0.25% by March 31, 2025. Remember this. 1 marker or a 2 marker in finance phase 2. Okay. So theory khatam. Since you don't have any questions, I will ask the question now, MCQ. And those who will be watching recording, please try it and please try to comment also. Please. Okay. Question number 1. Which company is set to invest around $1 billion for semiconductor? Shreya, Monica, Isha, Nivedita, right. Monica, earlier I didn't. Since I am not making PDFs right now, so I can't say, but no important news is deleted from compilation. ठीक है, none of the important news will be deleted from compilation. That's a guarantee. Since daily जब न्यूज होती है तो उतना खबर नहीं होती है कि ये वाली हटानी है या ये वाली रखनी है. कंपाइलेशंस में जनरली नॉन इम्पॉर्टेंट न्यूज आर ओमिटेड जनरली. ठीक है, तो अगर वो हट भी रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ छूट जाएगा. फेज 2 रिलेटेड जो भी न्यूज होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर अप्रैल पार्ट 2 का पीडीएफ देखो तो काफी एक्सटेंसिव हो गया है. इट विल बी अगेन, इट इज अंडर रिजॉल्व, इट विल बी रिजॉल्व फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ अप्रैल. ठीक है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं हटेगी. जो नॉन इम्पॉर्टेंट रही है इस बार, ओनली दैट विल बी ओमिटेड. तो नो इशू अबाउट. C. Okay, C is the right answer. Oh, now question number 2. According to World Bank chief economist, why would the rise of China and India as high income nation cause disruption in the global economy?
Correction. Priya, sir, where can I find the compilation? 10-day compilation is shared in the paid group and the course portal. If you are subscriber of Crack Grade B RBI, 10-day compilation आपके course portal में मिल जाएगा. Of the news daily, you will find in the paid group, compilations in the course. Shreya Isha Nivedita, correct. D is the right answer. Okay, US and other Western nations have certain level of development. Share it for world economy. Okay, Monica, right answer. Now, question number 3. What are Micro and Small Enterprises Federation Council in India and why are they important? Why are they important should not be question. Just read. Okay. Just what are MSME FCs, facilitation councils? Monica, Shreya, Isha, Nivedita, everyone is right. A is the correct answer. बाकी तो इसका है ही नहीं option. Okay, they are set up by state government for settling disputes for delayed payment, delayed by 45 days or more. Question 4. What is Bank of Maharashtra's plan to raise additional capital? कितना? Around 7,500 crore आने जा रहे हैं. Okay, Monica, Shreya, Nivedita, everyone is right. Easy question. D. By issuing equity shares through follow-on public offer, rights, qualified institutional placement, or by Basel III bonds. Correct, Nivedita. By how much has the government's wheat procurement increased in the ongoing 2024 marketing year compared to previous year? चलो देखिए गया तो हो ही जाए. Correct, correct, Shreya. 6 to 12%. B or is it C? Decide. C, 12%. They are right. Sixth, it is C. Yes, it is C. Correct. Correct, Shreya. You are right. Question number 6. The downside risk to India's GDP forecast as per monthly economic review for March by Ministry of Finance. Easy question. तो ऐसा क्वेश्चन आया था ना उसमें IFSC में they were asking for reasons. Correct, Shreya. Correct, Isha. Correct, Monica. A is the right answer. Rising crude oil prices and adverse weather condition, global political instability से ज़्यादा economic instability or financial instability. Now question number correct Nivedita A. Question number 7. What is the share of Northeast Indian corporate social responsibility funding financial year 22?
Correct, Monica, Isha, Shreya. It is D, 7.7%. Top 5 states के around 35%. 35%. Now question number 8. What is the personal income tax to GDP ratio for fiscal year financial year 22? Correct, Nivedita, right. सही जवाब. Now question 8. Yes, personal income tax. Correct, Isha, correct. For question number 8. Correct, Nivedita, correct, Shreya. Okay, so it's B, 2.94%. Around 3% हमारा भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो है. पर्सनल इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो. तो क्वेश्चन नंबर 9. इंडियाज रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. अब ये वर्ल्ड बैंक का है तो इट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, इट इज वर्ल्ड बैंक सो इट इज इम्पोर्टेंट. सो रिमेंबर द दिस रैंक 38. ये करेक्ट, श्रेया, ईशा, राइट आंसर. बी करेक्ट, निवेदिता, इट्स बी 38. ओके, और उसकी वो आउट ऑफ 5 मिलता है 3.4 है इंडिया का नंबर. Okay, now question number 10. What is the net profit after tax of IREDA? Very bad question. Phase 1 क्या है ये? Profit after tax है net profit, not profit before tax. Profit before tax ज़्यादा था, around 1200-1100 करोड़. ठीक है, 865 crore is profit after tax. A is the correct answer. Right, Isha. Yeah, second attempt वाला. So 865